Assalamu alaikum everyone, welcome back to Babay on Wheels, and today is day 2 of the build. And ये जो day 2 है basically इसमें this is not actually day 2, this is actually step 2. ठीक हो गया। पहले स्टेप में काला उस्ताद ने जनाब जी ट्रांसमिशन उतार ली थी। अब हम लोग जा रहे हैं बनी गाला, जहाँ पे एक हम लोगों ने स्काउट किया है एक डोनर बीटल। तो उसकी अभी हम देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, एंड we're just gonna go and check it out because it's a 1967 डोनर बीटल। तो वो हम देख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो नासिर भाई इज़ द पर्सन जिन्होंने ये सब ढूंढी, सब कुछ किया। सो नासिर भाई, थैंक यू सो मच, सीरियसली मीन्स अ लॉट। एंड नासिर भाई अभी सफदर भाई को लेके सीधा उधर जा रहे हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली यू नो we're just gonna get that। एंड या साथ में मैं ड्राइव भी करूँ, और पता नहीं मेरा क्लिप टूट गया एज इन द मोबाइल होल्ड। सो दिस इज़ राइट इन द वो जो नहीं होता कहते हैं बिनिकल के अंदर। या my bad guys, my bad, but yeah, so yeah, I kind of lost my chain of thoughts। और लोग मुझे कह रहे हैं पागल हो गया, अपने मीटर से बात कर रहा है। मीटर हो गया मीटर। Anyways, so let us reach to Bani Gala and I shall update you regarding that। एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम अंकल, जाने दो प्लीज़ मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। It's a beautiful day today और बड़ा खूबसूरत दिन है यहाँ पे। And yeah, I'm really happy mashallah that we got the donor bug। So yeah, fingers crossed, it's in 1967। That's a good one। Aha। A few moments later। वैसे guys, I think I need to bring the dashboard dash cam diaries back। अभी एक अंकल साहब ने जनाब जी अपनी करोला ना इधर देखी ना उधर देखी, मेन रोड पे मेरे सामने लेके आ गए। अल्लाह का शुक्र है पसाइड की ब्रेक्स चल रही हैं। खालिद भाई, जितनी दिल से दुआएं निकली है ना आपको अभी ब्रेक मार के मैंने बहुत दुआएं दी आपको। सो थैंक यू वेरी मच, और बचत होगी। सो आई थिंक वी नीड टू ब्रिंग द डैश कैम डायरीज बैक।
सफदर भाई क्या तासुरात है? तासुरात जब सारा पुर्जे सामने आके पक ऐसा होता है। गाड़ी की जो बॉडी है ना उसमें जान है, जी माशाल्लाह, इसमें है, इसकी बोन्स में ताकत है। उसमें जान है। That's one fender and that is the decklet. तो अभी इसका नासिर भाई अभी आप क्या करें? इसका मैं खाली वो कर रहा हूँ कि टायर ख़राब ना हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा हवा रख के। सही। भी कम है, GT मैं भर दूँगा। ये नासिर भाई ये तो बीच से कटी हुई है। हाँ जी, ये ऐसे ही काट के भी बेचते हैं गाड़ियाँ। अच्छा Cut it into 4 pieces. I had to pay extra जी। ताकि वो ये ना काटें जो किया थी। Really? Damn. अभी एक क्योंकि वो नहीं है ना पावर यहाँ पे, जी। so I have to re-plug it, re-fill it. अच्छा ओ जी जी, मैं देता हूँ। तुम बूढ़ी है, ले ले ले। किधर की? वो ये तो लोग के मार्जिन सीखनी थी। उस दिन करना है ना, एक लड़ भी गई थी आपको। ओए ओए, हम सब के अच्छे और बुरे वक्त का साथी WD-40। ये ले जी। ऐसी काम में कितना सारा Now if I had a cable long enough, जी। ये भरता रहता है। but अब हो ये रहा है कि मुझे हर बार इसको बुलाना पड़ता है भर के उधर से। फिर ये तो हो गया, अब दूसरी साइड वाले भी कर लूँगा। उफ, उधर तो उस एक्सेस का मसला है। किसी तरह से कर लूँगा ताकि वो that kills the tires as well। जी। अगर वेट के नीचे उसमें। अच्छा तो नासिर भाई, इसमें से लाइक फॉर द एमेच्योर आई ये कटी हुई है, बिल्कुल बुरा हाल हुआ है। इसमें से क्या क्या सैल्वेज हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? Basically the fenders, ठीक है। even the sides, the engine, the transmission, the axles, everything is salvageable, very good working. Basically this is how we keep Volkswagens running in Pakistan. Yeah. Because आपके पास जो है कैनिबलाइज करने के लिए बची नहीं है। जी। जो यहाँ पे ऑलरेडी ठीक हुई, ख़राब हुई, रिपेयर हुई, दोबारा चली, दे आर नॉट इन अ कंडीशन कि वो ऐसे पैनल्स हार्वेस्ट आप उसमें से कर सकें। तो these are the cars, they come in as scrap. Nasir, वैसे have you ever kept नहीं होता like a log that how many beetles have you rescued and 82. saved? 82. Restored 82. Restored 82. And how many have you saved? Like That I don't remember. I don't remember. I've like rescued for a lot of friends, family.
And now Babay on wheels, because this is your rescue as well. Well, yeah, I would not consider this as this thing, but yeah, this is it is a rescue. It was done before I met you, like for this project, but it's been just lying there. It would have been chopped, so that I could not see happen. Seriously, this is so amazing that आप एक गाड़ी से this एक बीटल जान देती है और कितनी बीटल्स बनती हैं. That's the point. That's exactly something that you should think about in lines के ऊपर. जी. अब वो देखिए एक और, that is an engine that came from Japan and a transmission and a tunnel. और ये भी जो है it's very very salvageable usable parts. सही. In fact they are very usable. जी ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट नए हैं. The engine is very nice. It's 1.3. 1.3 okay. 1.3 है और इसका 009 distributor front कुछ. This is the front as well. इसकी beam है which is very ज़बरदस्त. ये एक दरवाज़ा नहीं, ये मेरा भी गला हुआ है. चलें, हो जाएगा. So that is a little problem, लेकिन हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है और हम इसका निकालेंगे. क्यों सफदर भाई? Alright guys, so scene ये है कि I'm heading back from that place. That was my one. Anyways, मैं वापस घर जा रहा हूँ. And I have to go to the radio. I had to cut my visit short. बेचारे नासिर भाई, my love and my praise for Nasir bhai, because he's been helping me so much in this build. It's not even funny. And उन्होंने सारा जो है ना वो brunt of all the work वो बेचारे उन्होंने handle किया है. Nasir bhai, big salute to you, seriously. And what a place you have, man, what a place. So anyways, तो update ये है कि जी we have the donor body of the car, and it's a 1967. Currently it's maroon in color, but originally it was white. तो अभी देखेंगे क्या सीन होता है. The body is in perfect condition, माशाल्लाह. This was rescued by Nasir bhai, जिसे कहते हैं ना, some time back, and it was rescued from Lahore. So yes, so अब situation ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमारी जो बन्नो बीटल हैं, they will be converted into 1967. So yeah, so I have a lot of ideas, and Nasir bhai is helping me so much. There are certain things, ये क्या हो गया है भाई? There are certain things, certain elements that I want the Beetle to be a part of. Like oops, sorry, I had to change again. So I always wanted a rack top. I don't think so that is going to be possible with this, but yeah, you never know. बहुत रश हो गया भाई यहाँ पे. So anyways, so situation ये है कि so let's see where we end up, and till next time, Babaji out, take care, have fun, and please like, share and subscribe to the channel, and yeah, follow me on Instagram. Allah Hafiz.